Thank you, Honorable Speaker, sir. With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India. ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, Honorable Speaker, sir, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ. थैंक यू सर. நாம் நாட்டின் தேர்தல் சட்டங்கள், யூனியன் பிரதேச சட்டங்கள், டெல்லி அரசின் சட்டம், தேர்தல் சட்டம் இவற்றை திருத்துவதற்கான இந்த சட்ட முன்வரைவை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். Allot me the time for only one person leaders, okay. But a constitution amendment bill drastically changing the electoral process of our country, that used to be introduced separately. That used to be introduction has to be discussed, then take the other bill. Otherwise, it will be not fair as far as constitutional amendment is concerned. माननीय सदस्यगण, मैंने आपको कहा है कि दोनों के विषय पर एक साथ बोलेंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस भी अलग अलग होगा और पासिंग भी अलग अलग होगी. मतलब चर्चा करते समय मैंने जॉइंट बोला है कि दोनों विषयों पर एक साथ चर्चा, बाकी मैंने पेश भी अलग अलग किया है. நடக்கும்போது நாடு முழுவதற்குமான தேர்தல் திருத்த சட்டம், யூனியன் பிரதேசத்திற்கான தேர்தல் திருத்த சட்டம் இரண்டையும் ஒன்றாக விவாதிப்போம் என்றுதான் நான் சொன்னேனே ஒழிய, மनीष तिवारी जी, இத அறிமுகப்படுத்தும் போது தனித்தனியாகத்தான் அறிமுகப்படுத்துவோம். I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House. அமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்ற இந்த மசோதா மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையில் உள்ள அந்த கூட்டாட்சி தத்துவத்தை எதிர்க்கும் வகையில் இருக்கிறது. Under our constitutional scheme, that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature. That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme where மாநில மத்திய அரசின் பாராளுமன்றத்தின் காலமும் மாநில சட்டசபைகளின் காலமும் எப்படி ஒன்றாக இருக்க முடியும்? இது அரசியல் சட்டத்தின் உணர்வுக்கு எதிரானது. Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the case of Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this இவ்வகையில் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருவது இந்த அரசியல் சட்டத்தின் படி அதனுடைய எல்லைகளை மீறுவதாகும். எனவே நான் இதை எதிர்க்கிறேன். धन्यवाद अध्यक्ष जी. मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के
विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से, मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम संसद की मर्यादा, परंपरा, उसकी चर्चा को उच्च कोटि की बनाए। तो नियमों के तहत 72 में के परिप्रेक्ष्य में आप 1 मिनट प्लीज आप प्लीज, एक मेरा ये आग्रह है, ऐसे नहीं बोलते बीच में। प्लीज बैठिए, ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा कि मर्यादा बोली। मैंने कहा नियम 72 के तहत आप उस परिप्रेक्ष्य के अंदर बिल का विरोध करने का आपका अधिकार है, वह भी विधेयक की विधायी क्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विषय पर। लेकिन विषय गंभीर है, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों आगे बोल रहा हूं, उस परिप्रेक्ष्य के अंदर वो अपनी बात को कहें, संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप अपनी बात कहें। मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर दूंगा, पर जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी तब आप जो भाषा बोल रहे हैं वह बोलने का अधिकार रहेगा। ठीक है, सब सहमत इस बात से? आपको देंगे, आप दोनों में से तय कर लो कौन बोलेंगे। हाँ, कल्याण, आप दोनों तय कर लो पहले। नोटिस है, चलो मैं दोनों को 2-2 मिनट रख दूंगा। पहले कल्याण बनर्जी। Under our constitutional scheme, the basic structure of constitution is read in between the lines. This proposed bill hits the basic structure of the constitution itself. And if any bill, any act which hits the basic structure of the constitution, that is ultra virus. And it is ultra virus. Sir, proposed Article 83 sub-Article 5 is just contrary to Article 83 sub-Article 2. Just contrary. Either you keep 83.2 or you keep 83.5. Both cannot be kept. Both are inconsistent with each other. Then, sir, effect of proposed Article 82A sub-Article 3 simply establishes that tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of the People. It is not a doctrine of pleasure. Doctrine of pleasure is under Article 311 of the Constitution. But a mandate which has been given by the people of the country that state assemblies tenure will be depending upon the doctrine of pleasure of this house. How it can be? This is inconsistent. It cannot be accepted. Sir, we must remember this. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. This parliament is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 1 and list 3. Similarly, state assembly is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 2 and also list 3, subject to that it would not be contrary so far concurrent list is concerned. விஷயங்கள் பற்றி சட்டம் இயற்றுவதற்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. அதே போலவே மாநிலங்களுக்கும் சட்டம் இயற்றுவதற்கான அதிகாரம் இருக்கிறது. The autonomy
of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra-virus. That is it's the basic structure of the constitution. Sir, Article 82 or sub-Article 5. Unfortunately, I can't think about it. I can't think that Article 82 sub-Article 5 is giving an uncanonized power to the Election Commission of India. Though we don't have any value, we don't have any value, then Election Commission of India will decide everything. Till doomsday, a party cannot remain as a ruling party. One day it will be changed. Sir, why law providing state funding for conducting the election is not brought? Every problem will be resolved. Do all elections. How many monies are being spent? All elections should be done. But from the state election fund, why you are not bringing? That will be about real election reforms. This is not the election reform. Okay. It is a reform. Sir, I have not finished, sir. It is not an election reform. Listen, sir. It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. No, it is not permitted. Sir, we have seen, we have heard. மாநில அரசுகளுக்கு தேர்தல்கள் நடத்துவதற்கான பணத்தை அவர்களே உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்காக ஒரு சட்டம் கொண்டு வருவதுதான் சரியான தேர்தல் சீர்திருத்தமாக இருக்கும். இத்தகைய இப்போது கொண்டு வந்திருக்கின்ற அந்த தேர்தல் சீர்திருத்தம் அது தேர்தல் சீர்திருத்தம் அல்ல. Pandit Jawaharlal Nehru has not brought any, sir, listen, sir, has not brought any constitution which really hits the basic structure. Excuse me. Sir, आप इतना रूठा मत कीजिए. आपने इतना रूठा मत. एक half minute. अपना रूठा मत होइए. This is not done. This is, sir, all the time. We have brought. This government has brought constitutional amendment, National Judicial Appointment Bill. It was passed. It has been struck down by the Supreme Court because it is hit the basic structure of the Constitution. There are so many amendments that have been. Sir, this bill we are opposing for introduction, and at the same time, sir, when you will take into consider, kindly take a division. We want to oppose and we will show you our stick. डीएमके टीआर बालू या कनिमोजी जी, आप भी डिसाइड कर लो आपस में. नहीं, वो कनिमोजी जी भी हाथ खड़ा कर रही है. मैंने कहा आप भी डिसाइड कर लो. अभी कनिमोजी टीआर बालू இருவரில் யார் பேசப் போகிறார்கள் என்பதை நீங்களே முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள். The Constitution Amendment Bill 129. As my leader, Dr. M.K. Stalin has said, टीआर बालू जी, it is anti-federal. नहीं, आपका नोटिस है, मैं दूंगा आपको. प्लीज बैठिए, आपका नोटिस आपको दूंगा, लेकिन भी टीआर बालू जी. Our unitary form of governance, killing its diversity and democracy in process. Unquote. Sir, I want to know, sir, how could they allow this bill, allow this? मैं आपको मौका दूंगा, आपका नोटिस है, मैं दूंगा आपको मौका. बैठिए. Sir, when the government is not having 2/3 majority, how could they allow this piece of legislation in this house? I want to know, sir. It needs 2/3 majority. மூன்றில் 2 பங்கு மெஜாரிட்டி இல்லாத போது இந்த அரசு இத்தகைய ஒரு அரசியல் சட்ட சீர்திருத்த மசோதாவை எப்படி கொண்டு வர முடியும்? எங்களுடைய தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்லியபடி நாங்கள் இந்த மசோதாவை எதிர்க்கிறோம். Cannot be curtailed with simultaneous election. The simultaneous election would incur additional cost of 13,981 crores.
In addition, 9,284 crores will be required for procurement of EVMs, VVPAT to meet the requirement of simultaneous election. The Parliamentary Standing Committee in its 79th report in 2015 has concluded that I quote, gaining consensus of all the political parties may be difficult and holding simultaneous elections. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை நடத்துவதற்காக Yes, I want to conclude, sir. At the same time, மேலும் அதிகமான செலவு the government ஏற்படும். can take up the matter with JPC so that it can be discussed there and bring back the இந்த சட்ட மசோதாவை ஒரு मैं सबको பார்லிமெண்ட் குழுவுக்கு அனுப்பி அங்கே விவாதம் நடத்த வேண்டும். सबको दूंगा समय, जिसका नोटिस नहीं उसको भी समय दूंगा, लाओ सबको समय दूंगा मैं। First you speak. नो फर्स्ट नहीं, एक वन सिंगल। I will be referring. हाँ, आप डिसाइड कर लो। Sir, I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation, One Election bill. Sir, our party's... Sir, our party's guiding force, Sri Nara Chandra... एक मिनट रूल 72 में है, लेकिन एक मिनट, हमने वक्त के समय भी सभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बोलिए ना कुछ। आपने अध्यक्ष महोदय जी, आपने शुरू में हाउस का सेंस लेकर के बहुत ही क्लियर शब्दों में आपने कहा कि पहले उसका उदाहरण भी आपने दिया और दो बिल्स को एक साथ क्लब करके चर्चा का समय एक साथ करेंगे, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन में अलग होगा। साथ साथ में ये भी कहा, क्योंकि नोटिस एक पार्टी से कई नोटिस आए हैं, किसी पार्टी से नहीं आया, लेकिन विषय गंभीर है, इसीलिए अध्यक्ष ने कहा कि सारे पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को, सारे अध्यक्ष விவாதம் தொடங்குவதற்கு முன்னரே நீங்கள் சொன்னீர்கள் இந்த சட்ட முன் வரைவு 3 முன் வரைவுகள் இருக்கின்றன. ஆனால் விவாதம் எல்லாவற்றிற்கும் சேர்த்து ஒரே விவாதமாக நடத்தப்படும். ஆனால் சமர்ப்பிக்கப்படும் போது 3 தனித்தனி சட்டங்களாக சமர்ப்பிக்கப்படும் என்று சொன்னீர்கள். அதே போல இதை பற்றி பேச வேண்டும் என்று நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கின்ற கட்சிகளில் ஏதேனும் ஒருவர் மட்டுமே பேச முடியும் என்பதையும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். ओके, प्लीज बैठिए, अभी बुलाते हैं, आपको भी बुलाते हैं, अभी मैं रूलिंग दे रहा हूँ, अभी प्लीज आप बैठिए, आप भी रूल की किताब बैठे हो तो मैं भी